This is one of the remote village in Roha, located in Raigad district of Maharashtra. Due to absence of primary healthcare services, villagers suffer from various health issues. Children and women are the worst affected. Deepak Foundation, with the CSR support team, Deepak Nitrate Limited, has rolled out mobile health units to promote universal health coverage to marginalized population across the state of Maharashtra and Gujarat. These MHUs travel to the remote parts of the states, providing primary and basic healthcare services to the rural and tribal population with the aim of reducing the cost of seeking healthcare and bringing the last mile reach of healthcare services to the poorest communities in remote villages. This venture is one of the most successful platforms for promoting the government's ultimate goal of achieving universal health coverage. Through the support of private and public partners, MHUs have gained prominence in increasing access to primary health care in most of the remote areas. We have started with the mobile health services that caters to about 25,000 tribal population. There are about 25 villages in this sector, and we ensure that the vehicle provide primary health care services at least twice per month in these villages. हमने जब अपना ऑपरेशनल स्टार्ट किया यहाँ पर हेल्थ को लेके, मोबाइल हेल्थ यूनिट को लेके, तो हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशंस को देखा कि किन विलेजेस में हमको वो पहुँचना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन एक ही था, सोल्यूशन यही था कि हम उनके पास में कैसे पहुँचे। तो हमने अपना मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू, जहाँ पर हमारी टीम थी, इसमें हमने डॉक्टर्स, नर्स, काउंसलर्स और जो ड्राइवर होता है, ये हमारी एक टीम होती है। इस टीम के साथ में हम लोगों ने उन 25 विलेजेस में जाना स्टार्ट किया। हमने जिन 25 विलेजेस को सिलेक्शन किया था वो रूरल्स के ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर से बस की कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल न के बराबर है, और स्पेशली जब बारिश का सीज़न होता है तो 3 से 4 महीने जो है वो सारे रास्ते ब्लॉक होते हैं। तो इन कंडीशंस में उन तक पहुंचना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। Defining the problem is a very important part of initiating planning for any kind of intervention. For defining the problem, we did a survey in around August 2015. The survey brought out various needs from the population of Roha. One of the needs was mobile health unit and also mobile library. Based on the data, we developed a very robust monitoring and evaluation system, because a very robust monitoring and evaluation system is a must for monitoring the impact of the project in a long-term basis. As per the CSR Act 2013, it's very imperative for any project to have a defined outcome, so that at the end of the life cycle of a project, the impact and outcomes can be measured, because without that, it is not considered as a part of CSR. Deepak Foundation is delivering quality health care to the remote populations by implementing around 10 MHUs that caters to more than 3 lakh population residing in the rural and tribal parts of Gujarat and Maharashtra. These MHUs are implemented either through CSR partnership or public-private partnership with the government. As per survey आपण चूज केलेत, तर 25 विलेजेस आम्ही मध्ये जातो मोबाईल व्हॅन घेऊन। त्याच्यामध्ये आपण फॉलोअप 15 डेज नंतर फॉलोअप असतो आपला। एक 4-5 महिन्यामध्ये आम्ही जवळपास एक 6500 पेशंट बघितले। मोर दॅन 80% पेशंट्स जिडॅट्रिक ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये फिमेल्स आर मोर प्रोन। अप्रॉक्सिमेटली 3500 आपण फिमेल्स आम्ही चेकअप केले, आणि अप्रॉक्सिमेटली 1500 लहान बच्चूस पीडियाट्रिक पेशंट्स आहेत। The services provided by these MHUs include curative treatment, addressing reproductive and child health care, counseling on family planning,
sanitation, hygiene, nutrition, and overall lifestyle modification for well-being. असे पण पेशंट आम्हाला भेटलेले आहेत की अराउंड 220/110 220/100 BP आहे, प्लस पिडल इडिमा आहे, सिवियर ब्रेथलेस आहे, बट स्टिल पेशंट नॉट गोइंग टू सिविल हॉस्पिटल ड्यू टू देयर फाइनेंशियल रीजन्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस. हम 2 या 3 विलेजेस को कवर करते हैं जो हमारा शेड्यूल बेस से डिसाइड होता है. तो पर डे हम लोग जो हैं हमारे पास में अराउंड 100 to 125 OPDs होता है. इसमें 4 से 5 जो है मेजर केसेस होते हैं जिसको हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में रेफ़र करते हैं. अभी हमारे पास में केसेस बढ़ना चालू हो गए हैं. उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि जो कॉस्टिंग प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि यदि वो यहाँ रोहा में या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है. 500 से 1000 रुपये के बीच में उनका कॉस्टिंग हो जाता है. तो जो डोर स्टेप हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो केवल 5 रुपीज़ में उनके तक हम पहुंच रहे हैं और मेडिसिन भी जो है हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं. तो मंथली अगर हम एक डाटा देखें, एनालिसिस करें तो मंथली हमारे पास में अराउंड 1500 लोगों तक हम जो है पहुँच पा रहे हैं. Now, effort is to ensure that the people who seek services get free of cost treatment and thereby reduce their out of pocket expenditure. Second effort is to link the services to the tertiary care facility so that these poor people who are unable to seek treatment from private sector can seek services from public health facilities at the tertiary level. So this also helps the government to get the services utilized in tribal area. दीपक फाउंडेशनची गाडी इथे आमच्या गावामध्ये येते, त्यामुळे बरेच लोकांना सोय झाली आहे याची. आजारी माणसांना पहिला 15 किलोमीटर लांब जायला लागायचं, गाडीची सोय असायची नसायची, त्यामुळे आता बरं पडते. दीपक फाउंडेशनची गाडी जवळ 8-9 महिने येते सतत आणि त्याच्यापासून बरेच लोकांना आमच्या फायदा झालेले आहेत. कारण 15 दिवसांनी गाडी येते त्याच्याबद्दल लोकांना म्हणजे जाण्याचं इथून रोहाला जायला लागतो, त्याच्यामुळे जाण्याचा खर्च वाचतो. मेन म्हणजे वेळ पण वाचतो, औषधही मोफत मिळतात, तोही खर्च वाचतो. Delivering primary healthcare services by reaching out to the unreached and bridging the gap in the last mile reach of healthcare services is the overall goal of these mobile health units. So this again is an effort of the last mile reach of services. Apart from curative services, we also are doing preventive services by conducting camps, creating awareness, prevention of tobacco addiction, alcohol addiction, and ensuring that the savings goes towards the education of the children. So it's a holistic CSR activity that we are doing. Deepak Foundation is therefore committed towards achieving universal health coverage and reducing out-of-pocket expenditure by rolling out many more of such MHUs across the country.